हेलो। वो चार वो ट्रिग्नो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला करवाए थे। अच्छा, फिफ्थ स्टार्ट करो, लिखो tan ऑफ a प्लस बी। तो tan ऑफ a प्लस बी के लिए हम sin ऑफ a प्लस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी बनाएंगे। तो sin a प्लस बी क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos ऑफ a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। Now divide numerator denominator by cos a cos b. So cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b। cos a cos b ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan a इंटू tan b। और जब tan a माइनस b का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर tan a माइनस tan b आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan a tan b। नोट करो, दिस इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सर एक सेकंड, वो साइन ए कॉस भी जो आपने वो डिनोमिनेटर वाला वो स्टेप बताया वो वापस बता दो, समझ नहीं आया। इससे ये वाला यस सर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b, इस टर्म से डिवाइड करो। न्यूमरेटर उन दोनों को कर दिया तो वो tan बन जाएंगे, ठीक। हाँ, नोट करिए। सर कर लिया। डन। यस सर। सबका हो गया? अनुश्री, निक्षय? यस। ओके, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकंड सेट। देखो अभी जो आपने फॉर्मूले बनाए थे वो सम एंड डिफरेंस के बनाए थे। अब सेट 2 जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, तो इसमें अब फर्स्ट फॉर्मूला होगा 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b एक्चुअली हो जाएगा, आपने जो अभी पहले फॉर्मूले बनाए हैं अगर उनमें से sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को ऐड करके देखो तो 2 sin a cos b बनेगा। सेकंड 2 cos a sin b, तो यहां पर sin a प्लस बी और माइनस sin a माइनस बी करना पड़ेगा। थर्ड 2 cos a cos b, so this is cos a plus b plus cos a minus b, and fourth 2 sin a sin b, that is cos a minus b minus cos a plus b। प्लीज ये फोर्थ वाला फॉर्मूले को थोड़ा सा केयरफुली याद रखिएगा, बिकॉज ये साइन का फॉर्मूला है बट बनता दोनों cos से है, एंड इट इज रिटन द अदर वे राउंड, cos a minus b minus cos a plus b। so this is an important formula, please note these down। दोनों मिल गए। सर तो मतलब आइडेंटिटी जो आपने इन वाली बताई है वो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin a sin b हो सकता है। हाँ, अगर ये दोनों तुम्हारे पास अभी ये आइडेंटिटीज लिखी हुई है ना, अभी ऊपर करी थी सॉल्व, यस सर। अगर इसको और इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। ओके। सर कर लिया ना। डन। यस। थर्ड
अब हम करेंगे सम टू प्रोडक्ट। अभी हमने किया था प्रोडक्ट टू सम, इनको CD फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। मैं एक आपको डिराइव करके दिखा दे रहा हूं कि कैसे डिराइव किया। देखो अभी आपने किया था 2 साइन A cos B इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ठीक है, अब यहां पर अगर आप A प्लस B को C मान लो और A माइनस B को D मान लो, एक बार दोनों को ऐड करो तो A का वैल्यू आएगा C प्लस D बाय 2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो B का वैल्यू आएगा C माइनस D बाय 2। तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2 इज इक्वल टू साइन C प्लस साइन D। नोट करो जरा, आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जाते समय बस नॉक कर दीजिएगा। हाँ जी, डन। Yes, sir. ओके, इसके अब इसके अदर फॉर्मूलाज नोट करिए। Now we'll not derive all of them. The remaining ones we'll just write down the formulas. And please understand, these are some things that, see, I'm going on with the derivations and all, that's all fine. But derivations and all are not required. I'm just telling you so that you know ki kahan se, how have we come to this result, or just to give you the feel. But these derivations are not important. What is actually important is that you have to learn these formulas by heart. There is no bypass to this. You have to learn. So please keep that in mind and start learning from day one only. This again is an important formula because it is again the other way around. It is a formula of cos, but it comes with sine. Okay. In some books, you might find the formula in the form like यहाँ पे it is C plus D, C minus D. There it would be written D minus C, and this minus would be not, would not be there. So this minuses can actually be absorbed in this and written like this. That 2 sine C plus D by 2 sine of D minus C by 2. So either way you can learn, but this is an important formula again because of the same reason that it is a formula of cos but ends up in sine. Note these down.
सर लिख लिया. Done. सर लिख लिया. Double check that you're writing properly. There should not be any error in writing, because if there is an error, you might learn the wrong thing and then it will become even more problematic for you. जो आपने सर फर्स्ट और सेकंड लिखा है उसका रिजल्ट सेम ही है, तो मतलब वो. No, it is not the same, beta. Sine and cos have interchanged places. यार सॉरी सर. Ah. That's what I'm saying. Write it down properly. Double check. There is no rush. Do it very, very carefully. See, trigonometry is something that if you do trigonometry properly, you are creating a very strong foundation for yourself for class 11th as well as class 12th. Just a second. Adi, सर नोटेड सर. just take 5 minutes and revise all that you have done till now. और क्योंकि इसके बाद जो formulas बनाऊंगा वो इन्हीं से बनेंगे. So I mean, I want you should, be a little familiar with whatever you've done till now. Just take 5 minutes and do that. You may, the best way of learning is just take a blank paper and write all of them down in one sheet. That would also help. Take a couple of minutes. Probably you can write down all the formulas that we've derived. We've derived 6 formulas in set 1. Then we've derived 4 formulas in set 2. Then we've derived 4 formulas in set 3. So altogether you have 14 as of now.
Done. Okay, next let's go to the fourth set. Now we are going to multiple angle formulas, multiple angle and half angle. Okay, now देखो हमारे पास we have one of these formulas, sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Okay, now if we write a b as b also as a, then this becomes sin 2a is equal to sin a cos a plus sin a cos a, so it becomes 2 sin a cos a. So this is formula for sin 2 theta or sin 2a. Now please remember, if sin 2a is this, then sin a will be 2 sin a by 2 cos a by 2. The idea is whatever angle is here, half of it will be here and half of it will be here. So same ways, if it is a, it will be a by 2 and a by 2. Okay. Also, if we divide this 2 sin a cos a by cos square a plus sin square a, because that is only equal to 1, and divide numerator and denominator by cos square a. So this becomes 2 sin a cos a upon cos square a divided by cos square a plus sin square a upon cos square a. So this becomes 2 tan a upon 1 plus tan square a. So this is your another result that you have to keep in mind. So sin 2a can be read in two forms. One is in the form of 2 sin a cos a, and the other is in the form of 2 tan a upon 1 plus tan square a. Note it down. सर आपने B को A में मतलब ऐसे ही लिया था या? हाँ, I've just assumed because I wanted to form this. Okay. Done? Yes, sir. Similarly, we can form the formulas of cos. So cos 2a comes out as cos square a minus sin square a.
Now, if we write cos square A as 1 minus sine square A, so this becomes 1 minus 2 sine square A. If we write sine square A as 1 minus cos square A, then it becomes 2 cos square A minus 1. And if we divide by cos square A plus sine square A, we can form it as 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Also, please keep that in mind that we have to also remember the reverse formula. Sine square A is 1 minus cos 2A whole divided by 2. Cos square A is 1 plus cos 2A whole divided by 2. And tan square A is 1 minus cos 2A upon 1 plus cos 2A. सर लिख लिया। एक बार इन्हें मेमोराइज करो। अच्छा, वो जो where you've written the sine वाले formulas ना, sine 2a वाले, there you can write this formula also, a special case. See, if we have something like this, 1 plus sine 2a, so we can write this 1 as sine square a plus cos square a, and this sine 2a as 2 sine a cos a. So this becomes sine a plus cos a whole square. So under root and square are removed when we left with sine a plus cos a. So this can be written as sine a plus cos a, and if it was a minus here, there would have been a minus here, there would have been minus here and minus here. So you can notice that, please note this down in the sine 2a wala group. Done? Yes. Okay, next is tan 2a. And tan 2a का simply वही tan a plus b वाले में रखने से बन जाएगा 2 tan a upon 1 minus tan square a. This has only one formula. This doesn't have multiple formulas. And also remember, like in case of sine, I should have discussed in cos also, but it's the same concept. I'll remind you in tan that if it was tan a, it could have been written as 2 tan a by 2 upon 1 minus tan square a by 2.
let's take an example here. If somebody says find tan 15 degrees, so we don't know tan 15 degrees, but we can say that tan of 30 degrees can be written as 2 tan 15 degrees upon 1 minus tan square 15 degrees. And we know tan 30 is 1 by root 3. So this becomes 2 root 3 tan 15 degrees is equal to 1 minus tan square 15 degrees. Take it to the other side, tan square 15 degrees plus 2 root 3 tan 15 degrees minus 1 is equal to 0. So we can say that tan 15 degrees, we apply the quadratic formula. So minus b plus minus under root b square. So it is 12 minus 4ac. So it will become plus 4 upon 2. So minus 2 root 3 plus minus 16, that is 4 upon 2. So it is minus root 3 plus minus 2. Now since 15 degrees is in first quadrant, so tan 15 degrees will actually be 2 minus under root 3. We will not take the minus 2 wala result, we'll take the 2 wala result. Are you getting the idea? Is this fine? Yes, sir. Done? Yes, sir. Noted, sir. Okay, now from 2 theta we go to the 3 theta forms. Now let's say we have to find sine 3 theta. So we can write it as 2 theta plus theta. So it can be written as sine 2 theta cos theta plus cos 2 theta sine theta. Now sine 2 theta, as we already know, we can write as a 2 sine theta cos theta, or ek cos theta is already there, so we can write it as cos square theta. And for cos 2 theta, we are replacing it with the formula of sine because we have to form everything in sine. Here also in place of cos square, we will write 1 minus sine square theta plus 1 minus 2 sine square theta into sine theta. Now this becomes 2 sine theta minus 2 sine cube theta plus sine theta minus 2 sine cube theta, which becomes 3 sine theta minus 4 sine cube theta. This is your formula for sine 3 theta. Also, if we rearrange, we can write sine cube theta is 3 sine theta minus sine 3 theta whole divided by 4. So you have two formulas to remember. One is this formula and one is this formula. They are all equally important. Done? Done, sir.
ठीक है. So this is your sine 3 theta. Next we have cos 3 theta, which again we can write as cos of 2 theta plus theta. Now this becomes cos 2 theta cos theta minus sine 2 theta sine theta, as the formula of cos of a plus b goes. So this is 2 cos square theta minus 1 into cos theta minus 2 sine theta, or 1 sine theta is already the 2 sine square theta into cos theta. So let this remain as 2 cos square theta minus 1 into cos theta minus 2 into 1 minus cos square theta into cos theta. So this becomes 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 cos theta plus 2 cos cube theta. So this is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. This is the formula for cos 3 theta. Okay. Now from here we can also derive the formula for cos cube theta. So cos cube theta will be cos 3 theta plus 3 cos theta whole divided by 4. So also keep this in mind. These are two important formulas here. Please note it down. Done? Yes, sir. Okay. The last formula of this first set of formulas is tan 3 theta, which we can write as tan of 2 theta plus theta. तो ये जाएगा tan 2 theta plus tan theta upon 1 minus. Now this we can also write like this. I'm replacing tan 2 theta by the formula. Now we take LCM. This becomes 2 tan theta plus tan theta minus tan cube theta whole divided by, देखो since 1 minus tan square theta is denominator for both, so I'm not writing it, वो cancel ही होने वाला है. So this becomes 1 minus tan square theta minus 2 tan square theta. So tan 3 theta, the formula actually comes out to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta.
Yeah, and here you're not required to find tan cube theta. Done? Yes, sir. अब एक बार डेरिवेशंस आपने देख लिए, इट्स ऑल गुड, ऑल फाइन. फॉरगेट द डेरिवेशंस को दिमाग से हटा दो. एक शीट में जिसमें अगर आपने पहले वो सारे फॉर्मूलेज मैंने जो अभी बोले थे लिखने के लिए बीच में आपको अपने वो लिखे थे, तो उसी शीट में कंटिन्यू करिए. और अगर नहीं लिखे थे तो एक नई शीट लीजिए और उसमें सारे सिर्फ फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं, नो डेरिवेशन, नथिंग, just form a list of all the formulas you have written. Take 5 minutes, do that. And please write it very neatly. ये लिस्ट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप अपने पास रखें सो दैट इसी से बार बार देख देख के यू कैन लर्न द फॉर्मूलाज. So you can take 5-10 minutes, write it properly. Just write the formulas. Don't write the derivations. Forget the derivations.
डन कर रहे हो? यस सर, कर रहा हूँ सर। यस सर। ठीक है, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक से बनाओ एंड ट्राई टू लर्न ऑल्सो।
डन बेटा? just सर बस 2 मिनट। 1 or 2 formulas. अच्छा ठीक, कर लो, बता दो फिर मुझे। Sir, done, sir. हाँ बेटा, 2 मिनट्स। यस सर डन। हाँ बेटा, कर लिया आप लोगों ने? लिस्ट बना ली? यस सर। ठीक है, अब आज आप लोग का काम यही है, बिकॉज यू हैव अ क्लास ऑन सैटरडे, तो हम इसके आगे का मैं आपको इसका यूजेज सब कुछ कैसे इनको अप्लाई करना है वो सब मैं सैटरडे को बताऊंगा। आप लोग आज से सैटरडे तक प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज। आपने अगर कुछ 30-40% भी मेमोराइज कर लिया, देन टू इट इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो आज आप ये काम शुरू कर दीजिए। डोंट ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, जस्ट मेमोराइज द फॉर्मूलाज। 3-4 बार करके आप यही लिस्ट को दोबारा दोबारा लिख के याद करो। ये लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिलीव मी ऑन दैट। जस्ट do as I say, you will benefit in the long run. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Bye. sir. थैंक यू सर। Thank you. Bye.